Okay, so is my screen visible? Yes, sir. Okay, so what I will do today, I will start with the next chapter, and at some point of time, I will come back to chapter second, and I will be just solving few problems if time permits, or you can just go through the solved problems. There are many solved problems in the chapter, and then there are unsolved problems. So try to solve problems. Uh, if time permits, we'll come back to that unit with some of the good problems. Okay, so let me start the next chapter. That is a chapter third, and the chapter is Fourier series representation of a periodic signal. Uh, so it is good that you have a some background about this Fourier series, and what you are going to learn in this chapter is how useful, or you will be able to appreciate whatever you learn in the mathematics about Fourier series. So how good is Fourier series for signal processing applications? Hmm. So as I have told you, uh, my lecture, I have a revised lecture note. It should be self-explanatory. So let us start with the lecture note. So Fourier series is one of the very important tools for the analysis and synthesis of LTI systems for a class of periodic signals. In the last chapter, we have studied LTI systems, and this Fourier series is going to play a very important role in analysis and synthesis of LTI systems for a particular class of signals, and that class is a periodic signal. Okay. So it will help you in analyzing the response of LTI system for a class of signals, and the class is periodic signal. Okay, so just a brief about the Fourier. So full name is J Fourier, and he is a Frenchman, and uh, he uh, he was born in 1768, and so this is the duration he was uh, there, and an active politician. That is very interesting. So an active politician and close associate of Napoleon Bonaparte. Some of you must have heard about Napoleon Bonaparte, and because of his political connections, the scientific world was not able to recognize and did not give a due recognition to his discoveries about this Fourier analysis. But lately, they come to know that it was a wonderful contribution from the Fourier. So, what was the contribution? So, Fourier's revolutionary discoveries, although not completely appreciated during his own lifetime, but have had a major impact on the development of mathematics, and still holding great importance in wide range of scientific and engineering disciplines. Still, what we have seen that there are new concepts, new techniques which are coming into play, and some of the good techniques they are getting they are getting obsolete. But as far as this Fourier series analysis is concerned, this is still holding good, and you require to study this Fourier series, Fourier transform, then discrete Fourier transform. All are still very impactful and very critical mathematical tools for signal analysis. Okay. Now, what is the motivation behind this chapter? So, the motivation is to
represent a particular class of signals with some elementary signal in order to have. So which class of signal? We know that we are going to target a class of signal that is a periodic signal. And why? What you are trying to do? You are trying to represent periodic signal using some elementary signal, and to achieve uh, a general building block for representing any signal. Hmm. Then easy to compute response. Yeah. Then eigen function property. Now, what is eigen function property? That we will see in due course of my lecture. So what we have seen, that we have tried to represent any signal with some basic signal. Yeah. And the purpose is very clear. Now, we have already seen that any signal can be decomposed into large number of elementary signals, that we have already seen. In case of LTI systems, what we have done, we have tried to uh, uh, means represent any signal, discrete or continuous, using a train of impulses. Okay? Like a discrete signal can be represented using a summation of this impulse function and the response, and we are able to figure out the response also. That is also a summation of the impulse responses with some scaling factor. And this we have seen both in time domain as well as a continuous time as well as a discrete time. So similar kind of thing we are trying to do. So we can work with some elementary signals such as a impulse signal, unit step signal. This is a ramp signals. Okay. Or हमने what we have seen in the last lecture, that the unit step response of an LTI system gives us. So this is ST is the unit step response. This is integration of the impulse response, and for a discrete time it is a summation of the sequence, or impulse response sequence. Similarly, we can just find out the impulse response if we know about the unit step response, both in discrete time as well as a continuous time. So these things we have already seen. Now, what this chapter will try to establish is it will try to use one more basic signal, very basic signal, but very important signal, and that is this exponential signal. So next elementary signal is a sinusoidal signal, and we know that the sinusoidal signal and this exponential signals are related, uh, because this can be written in the form of sinusoidal using Euler's formula that you know. ये क्या होता है? Cos omega naught t plus j sin omega naught t. So this is a e raised to the power j omega naught t. So this signal, the exponential signal, can be represented in the form of sinusoidal signal. Similarly, the sinusoidal signal can be represented in the form of exponential signal. So they can be interchangeably used. So this e j omega naught t is a complex exponential signal, or this is also called as a complex sinusoid. And if it is a real, so real exponential function you must have seen in mathematics. So it is represented using this formula, which can be expanded like this. Then a complex exponential, this is the Euler formula, which relates this exponential signal with the sinusoidal signal. And there are few things that we know about this relation. Is the magnitude of this exponential function is a 1. Then the exponential form of a complex number
So a complex number, if z is a complex number, it can be represented in the exponential form like this. Or z equal to r, and e j theta can be represented as cos theta plus j sin theta. Then there is a term which is called argument of z. So if z is a complex number, so there is a term argument of z. So argument of z is, if z is 0, the argument of z equal to theta, where z equal to r cos theta plus j sin theta, and this theta belongs to argument z. We say that theta is an argument of z. So there is nothing big, a big deal about this. You can easily figure out this theta is called the argument of z. Then ej omega t is a complex exponential signal, and it can be written as st, where s is a sigma plus j omega, and we can consider, in our case, we can consider sigma as a 0. So that's fine. This term, this exponential function can be represented with a more generalized function, that is e to the power st, where s is represented as this term. Now, having introduced the basic or the elementary exponential signal, now we'll try to just find the response of LTI systems to complex exponentials. क्योंकि ultimately हम करने क्या वाले हैं, what we are going to do ultimately, जो हम establish करना चाहते हैं, so we want to establish that a periodic signal can be represented as a linear combination of various harmonics of these complex exponentials. ठीक है, और अगर हमें क्या है कि लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि लीनियर और एलटीआई, वी आर टॉकिंग अबाउट एलटीआई सिस्टम्स. सो once I know the response of an LTI system to an elementary exponential function, then I will be able to compute the response of the LTI system for all other harmonics. Fine. So if I am able to do that, then I will be able to easily compute the response of an LTI system for a signal, or for a signal which is a linear combination of harmonics of higher harmonics of exponential or complex exponential functions. तो ये काम के लिए हमें सबसे पहले जरूरी ये जानना है कि भाई हम ये देखना चाहते हैं भाई ये जो LTI सिस्टम है इसका रिस्पांस जो है वो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के लिए क्या होगा. ठीक है. So it is advantageous in the study of LTI system to represent signals as a linear combination of the basic signals that possess the following two properties. ठीक है. It is advantageous in the study of LTI system to represent signals as a linear combination of basic signals that possess following two properties. तो क्या है कि LTI सिस्टम को अगर स्टडी करना है तो जो सिग्नल है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें जिसमें कि दो प्रॉपर्टीज हो. किसमें? सिग्नल्स में. ठीक है. वो क्या क्या प्रॉपर्टी हो सिग्नल्स की. The set of basic signals can be used to construct a broad or useful class of signals. हम क्या कर सकें कि using some set of basic signals I am able to construct a broader class of signals. एक तो ये काम हम कर लें. ठीक है. उससे हमको फायदा क्या होगा कि भाई ये जो बेसिक सिग्नल्स हैं उसका रिस्पांस टू एन LTI सिस्टम मुझे पता है. ठीक है. तो इससे क्या होगा कि मुझे कोई सा भी एक अननोन सिग्नल है जिसको मैं अगर बेसिक सिग्नल्स के टर्म में अगर मैं कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं तो it will be easier for me to compute or to know the response of the LTI system against the given signal or considered signal. Then the second part is the response of an LTI system
to each signal should be simple enough in structure to provide convenient representation of the response of the system. ठीक है, अब क्या हो कि जो रिस्पॉन्स जो हो वो कुछ सिंपल सा हो और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर्ड हो कि भाई अगर एक बेसिक सिग्नल का रिस्पॉन्स मिल गया तो बाकी का भी रिस्पॉन्स हमको आसानी से कंप्यूट हो जाए, ठीक है, ताकि हमें कम से कम एक्सरसाइज करना पड़े। ये हमारा पर्पस है, ठीक है। तो आगे देखते हैं ये पर्पस हमारा सॉल्व कैसे होगा। सो द फर्स्ट थिंग वी हैव टू कंसीडर अ कंटिन्यूअस टाइम एलटीआई सिस्टम विथ इंपल्स रिस्पॉन्स एचटी। तो सबसे पहले हम एक कंटिन्यूअस टाइम एलटीआई सिस्टम लेते हैं। इसका मतलब वी आर गोइंग टू टेक इनपुट सिग्नल एज अ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एंड देन वी आर गोइंग टू सी हाउ इट वर्क्स। Later on we will take a discrete LTI system where we will be taking input signal as a discrete signal, discrete time signal. So input signal xt हमें क्या देखना है, सबसे पहले एक बेसिक एक्सपोनेंशियल सिग्नल का रिस्पॉन्स कैसा होता है एलटीआई सिस्टम में, ये हमें देखना है। सो इनपुट सिग्नल xt आई हैव टेकन, so the response of the system will be, हम दोनों तरह से ले सकते हैं, x टॉ h t माइनस टॉ d टॉ कर सकते हैं, या फिर हमें यहाँ पे आई एम मोर कंफर्टेबल विथ x t माइनस टॉ h टॉ d टॉ। So this is how I have to come. I will compute a response, and this equation holds for, it is valid for only LTI system, so we are considering only LTI system. So having done this, now you have to put the value of x t minus tau. So it will be e raised to the power s t minus tau h tau d tau. So again you will simplify it, and so this is the constant. It will be just taken out. So I'm left with this one. So this term, this whole term, so it will be function of s. It will be function of s. So I'm going to say this as a hs. Fine. So this yt is represented as e to the power sths. तो क्या था, एक इनपुट हमने लिया क्या था, वो e टू द पावर st, एंड आउटपुट हमें क्या मिल गया, द सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाइड विथ सम कांस्टेंट व्हिच इज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ s, ठीक है। सो वेयर hs is given as this integral, hs is a complex constant where the value of s, और हमने अभी जैसे s लिया उसमें क्या लिया है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा लिया है, सिग्मा तो मान के चलो 0, तो दिस s this is depending upon omega. So so this is some constant, it is not depending upon t, so this is some constant, and since we are dealing with the complex number, so this hs is a complex constant whose value depends on s, and और ये क्या है, hs क्या है, it is a finite integral. So finite integral है, so you will be getting some value of hs, and tau is the dummy variable, that's fine. अब हमें देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग निकल के आता है इससे, ये क्या निकल के आता है कि if e raised to the power st is an elementary signal, then yt is the same signal multiplied by a constant. ठीक है, अब ये देखिए बड़ा अच्छा सा निकल के आ गया कि अगर बेसिक सिग्नल, अगर एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, तो एलटीआई सिस्टम का रिस्पांस भी क्या है, हमें वही बेसिक सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट, ठीक है, hs, ठीक है। अब क्या है, दिस अगर इस तरह का अगर कोई सा भी फंक्शन हो जिसको कि मैं एलटीआई सिस्टम में इनपुट दूं और आउटपुट हमें क्या मिले, यही सिग्नल मिले multiplied with some constant, so such signals are called as eigen functions. So such functions are called as eigen function. So this st equal to e to the power st is eigen function, ठीक है। और ये जो आपका hs है, this is called eigen value, this is called eigen value. So if
So I have to conclude this by saying that if we excite a LTI system with eigenfunction signal, the response of the system is the same function multiplied by a constant, which is hs here. The multiplicative constant hs is called eigenvalue. तो क्या हो गया? So we have introduced the concept of eigenfunction. और आइगन फंक्शन अगर कोई सा भी सिग्नल है, बेसिक एलिमेंट्री सिग्नल आइगन फंक्शन है, तो एलटीआई सिस्टम को अगर मैं एक्साइट करूंगा एक आइगन फंक्शन से, सो जो हमारा आउटपुट आएगा वो भी एक आइगन फंक्शन ही होगा. इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड आइगन वैल्यू. ठीक है, ये हमारे लिए बड़ा अच्छा हो गया कि कोई सा भी बेसिक सिग्नल है उसको मैं एलटीआई मतलब बेसिक एक्सपोनेंशियल सिग्नल, तो हमारा आउटपुट भी एलटी वो एक्सपोनेंशियल सिग्नल ही आएगा. इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट hs दैट कैन बी फाउंड. ओके, इज इट क्लियर? I need some acknowledgement. Right? हाँ सर. Yes, sir. Okay, fair enough. अब आगे बढ़ते हैं. अब क्या है? अब हम ये चाह रहे हैं भाई, now let xt corresponds to a linear combination of 3 exponentials. ठीक है, और ये एक्सपोनेंशियल सिग्नल ये पीरियोडिक सिग्नल है, ये मैंने पहले भी बताया था. In very first chapter when I was dealing with some basic signals deliberately. So there I took this, I analyzed this exponential signal और इसके बहुत सारे combinations को हमने explain किया था. Then I also demonstrated that this is periodic signal. So this xt is a signal which is a linear combination of different basic signals. So ये सारे periodic signals हैं. So it is linear combination of many periodic signals. For just for the sake of example, I have considered only 3 signals. ठीक है, और S1, S2, S3 बेसिकली क्या होगा, ये ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 2, मतलब अलग अलग इसके फ्रीक्वेंसीज हैं. ठीक है, तो टाइम पीरियड भी अलग अलग होगा. So all these signals are representing different frequencies and thereby different time periods. Now from the eigenfunction property, the response of each signal response to each signal separately is. अब जैसे इनपुट सिग्नल ये क्या है, एलटीआई सिस्टम है, तो क्या होगा, लीनियरिटी, प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी ना. तो ये इनपुट अगर है तो आउटपुट हमको मिल रहा है ये इसके कोरस्पोंडिंग, ये दूसरा इनपुट इसके कोरस्पोंडिंग आउटपुट ये मिल रहा है. तीसरा इनपुट सिग्नल के कोरस्पोंडिंग आउटपुट ये मिल रहा है. तो ये चूंकि लीनियर सिस्टम है तो प्रॉपर्टी ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करोगे और हमको जो आउटपुट मिलेगा yt वो भी क्या होगा, समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेस. ये. ठीक है, now it is time to generalize it. So if you generalize it, then I have to say that if the input or excitation signal is represented as some xt, which is a summation, which is a linear combination of different harmonics of complex exponential, then the output of the LTI system is also a summation of harmonics, means a summation of those exponential functions multiplied with their eigen values. This is eigen value. ठीक है, अब ये क्या है, ये जो है भाई देखिए, ये यही जो देखिए की पॉइंट है, ये जो है की पॉइंट है फोरियर सीरीज यूज करने का. क्योंकि हम अगर क्या है कि अभी तक जो आपने फोरियर सीरीज पढ़ा है उसके हिसाब से आप क्या कहते हो कि आप कोई सा भी पीरियोडिक सिग्नल है उसको आप डिफरेंट हार्मोनिक्स ऑफ साइन एंड कॉस में रिप्रेजेंट कर सकते हो. ये आपने हो सकता है मैथ्स में पढ़ा हो. तो उससे आपको ये समझ में आ गया कि अगर साइन कॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और साइन कॉस एंड दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल they are related and they can be interchangeably used.
तो मैं ये कह सकता हूं कि एक फोरियर सीरीज अगर एक सिग्नल पीरियोडिक है तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ linear combination of different harmonics of a complex exponential signal। ठीक है, और ऐसी अगर बात हुई, यानी कि कोई सा भी सिग्नल को अगर मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यानी कि फोरियर सीरीज के हिसाब से अगर मैं एक सिग्नल को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, so I can very easily figure out the output of that signal or response uh, I can easily figure out the response of LTI system for this input signal, which can be compiled like this। ठीक है, तो ये देखो, ये है मेन आइडिया। ठीक है, कि अगर मैं एक पीरियोडिक सिग्नल को अगर मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लूंगा तो मैं उसका रिस्पॉन्स भी इजीली कैलकुलेट कर लूंगा। हमको इसी से मतलब है। मैथमेटिक्स में आप क्या कर रहे थे, आप फोरियर सीरीज निकाल रहे थे, बहुत अच्छा निकालिए, लेकिन हमको यहाँ इससे मतलब है कि एक पीरियोडिक सिग्नल है एंड मुझे ये पता चल गया कि ये पीरियोडिक सिग्नल है, तो मैं उस सिग्नल को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मींस आई शुड बी एबल टू रिप्रेजेंट दैट सिग्नल इन दिस फॉर्म, and if I am able to do that, then I can easily find out the response of that signal, response of that signal, uh, response of LTI system to that signal। ठीक है, so this is a main thing that we have to means focus। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि अब देखिए कि फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस टाइम पीरियोडिक सिग्नल। अब ये बात भी आपको कन्विंस होना पड़ेगा कि भाई एक पीरियोडिक सिग्नल है अगर, तो उसको मैं फोरियर सीरीज से रिप्रेजेंट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो ये चीज जानने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कि भाई पीरियोडिक सिग्नल क्या है। हमने पहले भी पढ़ा है कि एक्स टी इक्वल टू एक्स टी प्लस कैपिटल टी फॉर ऑल टी वेयर टी इज द फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स टी। उसके बाद क्या है, फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स टी is the minimum positive non-zero value of t for which equation 1, this is equation 1, is satisfied। और फंडामेंटल पीरियड अगर आपने निकाल लिया तो यू कैन कंप्यूट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी which will be omega naught equal to 2 pi upon t, capital T। so just for the revision, अब देखते हैं कि भाई एक पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स सिग्नल जो है हमने लिया, ठीक है, एक्स टी इक्वल टू ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी। ठीक है, अब क्या है, अ सेट ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स आर रिप्रेजेंटेड एज phi k t इक्वल टू ई टू द पावर जे के ओमेगा नॉट टी, और ओमेगा नॉट को 2 पाई अपॉन टी लिख सकते हैं, वेयर के विल बी टेकिंग वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। तो ये जो है phi k, ये क्या है, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू अ हार्मोनिकली रिलेटेड सेट ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स। ठीक है, और ये सारे पीरियोडिक होंगे, दैट्स फॉर श्योर। सपोज ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी, या फिर ई टू द पावर जे 4 ओमेगा नॉट टी, 5 ओमेगा नॉट टी, ये सारे पीरियोडिक है। ये जो सिग्नल है इसका पीरियोडिसिटी क्या है, 4 ओमेगा नॉट। इसका पीरियोडिसिटी, इसका जो ये फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये 4 ओमेगा नॉट, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। ठीक है, तो जिसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका जो टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा वो कम होगा, ये आप जानते हो, यू कैन इजीली फिगर आउट। तो यहाँ पे क्या है कि आई हैव अ I have a different complex exponential signals which are harmonically related। मतलब जो उनका जो आपका जो टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है, और हर एक का अपना अपना एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा या फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा। सो दीज सिग्नल्स हैव अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ k ओमेगा नॉट। ठीक है, जैसे e टू द पावर j 4 ओमेगा नॉट t है, ये सिग्नल है, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 4 ओमेगा नॉट t होगी, वही मैं 4 ओमेगा नॉट होगी, वही मैं कह रहा हूं इसको k ओमेगा नॉट। एंड द टाइम पीरियड क्या हो जाएगा फिर, t डैश क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन द
fundamental frequency, so which is a k omega naught. अब यहाँ पे देखिए 2 pi omega naught, it is a t, which is a fundamental frequency of the basic exponential function that you have taken. तो क्या है, अब आगे बढ़िए। 10 a linear combination of harmonically related complex exponential of the form, अगर मैं क्या करूं कि एक सिग्नल ऐसा बनाऊं जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब यही जो आपको पता है फोरियर सीरीज का डेफिनेशन, तो एक सिग्नल xt में ले रहा हूं जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस से रिप्रेजेंट होता है। सो दिस xt कैन बी रिप्रेजेंटेड एट समेशन k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी a k e टू द पावर j k ओमेगा नॉट t। सो ओके, कोई बात नहीं। अब ये जो xt है ये भी क्या होना चाहिए, जस्ट ए मिनट, हेलो, हाँ ठीक है भाई, मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी करता हूँ। Just excuse me for 2 minutes. Some urgency is there. Okay. So अब क्या है, अब ये जो xt है ये भी क्या है, पीरियोडिक विथ द पीरियड t। सबसे बड़ा पीरियड, आज मान लीजिए कि ये जो पीरियोडिक है, मान लीजिए कोई पीरियोडिक ऐसे है, कोई पीरियोडिक क्या है, ऐसे है, कोई पीरियोडिक ऐसे है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी उसका पीरियड क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो जो फंडामेंटल पीरियड होगा इस सिग्नल का वो सबसे बड़ा वाला पीरियड होगा, ये वाला, ठीक है ना। सो द फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस सिग्नल xt इज t, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम k इक्वल टू 0 लेते हैं तो देर इज ओनली वन टर्म, सो दिस a0 will be there and this exponential term will be 1. So for k equal to 0 we have only one term, that is a naught, which is a constant। और ये आपने पढ़ा होगा फोरियर सीरीज में, यही वो डीसी कंपोनेंट है। उसके बाद k इक्वल टू अगर +1 या -1 लेते हैं तो जो हमारा टर्म आता है वो a -1 e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट t, और दूसरा टर्म ये प्लस आता है, एंड बोथ आर हैविंग द सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा नॉट, ठीक है। इसी तरह से क्या है कि ये जो समेशन है इसमें दो टर्म्स ऐसे हैं, एक तो डीसी कंपोनेंट, देन प्लस टर्म और माइनस टर्म, उनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, सेम हो रही है। सो सिमिलरली द कंपोनेंट्स फॉर k equal to plus n and k equal to minus n are referred to as nth harmonic components, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि there are first, second, third harmonic, fourth harmonic and nth harmonic components which are there in this signal xt। और xt क्या है, xt is the signal which is represented by linear combination of harmonically related complex exponentials, ठीक है।
और जिसका कि फंडामेंटल पीरियड क्या है, वो टी है, कैपिटल टी। ये बात हमें समझ में आ गई। The representation of a periodic signal in the form of equation second is referred to as Fourier series representation। और यही जो ये है आपका सेकेंड इक्वेशन यही नीचे ये सेकेंड इक्वेशन है। सो दिस इज कॉल्ड अ फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, ये बात हो गई। अब सवाल ये होता है कि ये बात तो अच्छा है कि ठीक है, फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन होता है किस तरह से, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन अगर आपके पास एक सिग्नल दिया हुआ है एंड दैट इज पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है, तो हाउ टू रिप्रेजेंट दैट पीरियोडिक सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ अ फोरियर सीरीज, दैट इज चैलेंजिंग, or that you have to learn. So I am going to take any signal, periodic signal. So whether I am able to write that signal in this form, the way the xt is written, so that is that you have to learn. So if you are able to do that, then I will say that this is the Fourier series representation of the periodic signal. And और जैसा कि आपको अभी तक पता है कि अगर एक पीरियोडिक सिग्नल आप ले रहे हो तो आप उसका फोरियर सीरीज जो है, यू शुड बी एबल टू राइट द फोरियर सीरीज, और यू शुड बी एबल टू कंप्यूट द फोरियर सीरीज फॉर दैट सिग्नल। ठीक है, और अगर नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब या तो आपको करने नहीं आ रहा है या फिर जो सिग्नल आपने लिया है वो पीरियोडिक नहीं है। ओके, सो लेट अस मूव अहेड। So determination of Fourier series representation of a continuous time periodic signal। अब बात आ गई कि हमारे पास एक पीरियोडिक सिग्नल है, अब उसको हमको फोरियर सीरीज में रिप्रेजेंट करना है। एंड हाउ टू रिप्रेजेंट, हाउ द फोरियर सीरीज इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग linear combination of exponential functions that we know. So this is how we have to represent any signal xt that I have taken, which is periodic. So we need a procedure for, अब इसमें देखो हमको निकालना क्या है, कोई सा भी सिग्नल xt है उसको हमको ऐसे निकालना है, इस तरह से करना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमको भाई निकालना है ये क्या, ए के, ये जो कॉफिशिएंट है ये अगर निकाल लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, और ओमेगा हमको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, सो लेट अस सी। सो वी नीड a procedure for determining this coefficient a k. How to do that? Multiply both sides। ये जो इक्वेशन है आपका इक्वेशन 3 का लो। So multiply both sides with e to the power minus j n omega naught t। दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड्स फ्रॉम 0 to t, कैपिटल टी, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, t is the fundamental period of xt, that's fine। अब क्या है, यहां पे देखिए ये जो आपका समेशन और इंटीग्रेशन है इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं, कर सकते हैं, इसलिए कर दिया। सो इंटरचेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन एंड समेशन यील्ड्स दिस वन। अब हमको ये मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये दूसरा पार्ट है इसमें जो है e टू द पावर j k माइनस n ओमेगा नॉट t dt का हमको इंटीग्रेशन निकालना है। और इसका इंटीग्रेशन अगर आपसे देखोगे, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको कॉस और साइन के टर्म में अगर आप लिखोगे, सो दिस इज द इंटीग्रेशन दैट यू हैव टू सॉल्व। और आपको ये पता है कि फॉर k नॉट इक्वल टू n, so the both parts, both the integral will be 0 and it will have a value only at k equal to n, जहां पे ये जो है cos 0 होगा, so I will have a t coming from this part। ठीक है, so this exponential will have a value t only for k equal to n and it is 0 for k not equal to n। ठीक है, so considering this one, now what I will be doing, I will be putting the value of integration in the previous equation। ये जो इक्वेशन है यहाँ पे, अरे ये कहां से आ गया, भागो भाई, है अरे कैसे हटाऊं इसको, सर उस मैसेज वाले आइकन पे फिर से क्लिक करिए।
बट क्या करें, क्या बदमाशी है यार ये। सर अभी आएगा, चेक करेंगे। चलो ठीक, ओके। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे जो ये इंटीग्रेशन है, यहाँ पे वैल्यू मैंने डाल दिया, एक ही वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, वो है t। तो क्या आ गया हमारा, सो व्हाट विल बी गेटिंग, और वो भी कब आ रहा है, जब k इक्वल टू n हो, ठीक है। तो एक की जगह हमने an रख दिया और इधर वैल्यू आ गया t विच इज इक्वल टू दिस पार्ट। और इसका मतलब क्या हो गया कि an इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो n की वैल्यू आप 1 2 3 सॉरी a1 a2 a3 कुछ भी वैल्यू आप लेते रहो, एंड यू आर एबल टू कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ द फोरियर सीरीज, ठीक है। अब क्या है, सिंस t इज द इंटीग्रल नंबर ऑफ द पीरियड्स ऑफ this sine and cosine, will obtain the same result if we integrate over any length of interval. Therefore, इसको हम एक जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं, an इक्वल टू 1/t एंड यू कैन टेक एनी इंटरवल, ठीक है। ये जितने आपके हार्मोनिक्स के जितने इंटरवल हैं, कोई सा भी ले लो, ठीक है, एक इंटरवल ले लो एंड यू जस्ट इंटीग्रेट इट एंड यू विल बी एबल टू कंप्यूट an। अब समरी क्या है इसका, समरी ये है कि इफ xt हैज अ फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज xt। हमने कोई सा भी सिग्नल लिया, पीरियोडिक सिग्नल, अगर ये इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, अगर ये xt हैज अ फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, अगर इसका फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है, अगर हो सकता है, ये अगर पीरियोडिक है तो होना चाहिए, सो देन xt कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। और इसको बोलते हैं सिंथेसिस इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड सिंथेसिस इक्वेशन। सिंथेसिस मतलब जोड़ना, एनालिसिस मतलब आप वहां तोड़ने का काम करते हो। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बिल्ड अप अ सिग्नल फ्रॉम अ वेरियस कंपोनेंट्स, ठीक है। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड अ सिंथेसिस इक्वेशन, एंड देन यू हैव टू कंप्यूट ए के, सारे कोफिशिएंट्स कंप्यूट करने हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला और दिस इज द expression that helps you in computing the coefficients, and this equation is called analysis equation. So there are two equations, one is a synthesis equation and other is a analysis equation. उसके बाद क्या है, the set of coefficients ak called as Fourier series coefficients or the spectral coefficients of xt। ये बात आपको पहले से पता है। और दूसरा क्या है, द कोफिशिएंट ए नॉट is the dc or the constant component of xt and it is given as a naught equal to this. So this is a so I will just stop here today. तो एक तो देखो क्या है कि लेक्चर नोट बनाने का बहुत फायदा है कि एक तो कोर्स कवरेज ठीक ठाक हो जाता है, एंड देन यू हैव अ मींस अ substantial reference material for your study. So is it working now? So are you comfortable with my lecture note? Yes, sir. यस Okay. सर। अब तुमको मैं पिछले चैप्टर सबका मैं अभी कंपाइल करके दे दूंगा, ठीक है। फिर एक फोन आ रहा है, क्या है इस, हेलो हेलो, हाँ कौन, हाँ हाँ, मैं कहीं बिजी हूँ, चलो ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब कल क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है विल ट्राई टू टेक अप फ्यू प्रॉब्लम्स एंड विल ट्राई टू represent this Fourier series in different forms, or maybe we'll be taking some exponential form then try to represent in trigonometric form and the vice versa. Okay, any question? किसी को कुछ पूछना हो, बताना हो तो बताओ।
हाँ, इस वीक में मैं टेस्ट लूंगा, क्विज लूंगा, ठीक है। फ्राइडे तक मैं किसी दिन क्विज लूंगा, मतलब कल के बाद मेनली थर्सडे फ्राइडे में मैं क्विज लूंगा। सो फर्स्ट चैप्टर आई विल बी कवरिंग, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सर टाइमिंग क्या होगा? शाम को ले लेंगे, टाइमिंग तो कभी भी 15-20 मिनट का लेना है, पूछ लेंगे तुमसे, ठीक है। जब कहोगे तब ले लेंगे, रात को कहोगे रात को ले लेंगे। ओके सर। ठीक है। सो if there are, you have nothing to ask, or should I conclude this lecture now? सर एक्सक्यूज मी Yes. सर, वो टेस्ट से पहले नोट्स दे दीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ, नोट्स मैं कल तक दे दूंगा, ठीक है, या रात को ही देता हूँ, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ओके।